Alex, can anyone enumerate? Sternoclavicular, sternal angle, costochondral joint, costo-vertebral joint, transverse vertebral joint, and rapophyseal joint. सही अच्छा जी तो ये 8 तरह की जॉइंट होंगी in the thoracic region. Sternoclavicular, you have studied in the upper limb. This is the costovertebral, between the head of the rib and the vertebra. Costotransverse, between the rib and the transverse process of the vertebra. Costochondral, between the anterior ends of the rib and the sternum with the costal cartilage. Sternocostal, these are the directly attached to the sternum, or interchondral 6 to 10, which are the false ribs which were attached by the costal margin. ठीक है, फिर manubriosternal junction है between the body and the manubrium sterni, and xiphi sternum between the body of the sternum and the xiphoid process. हमने अगर टाइप करते हैं sternoclavicular की, it is a synovial joint of plane having double plane variety because this cavity is divided by an articular disc into two subcavities. ठीक है, फिर costovertebral कौन से joint होंगे? That will be between the head of the rib and the body of the vertebra. That are the costovertebral joints. ठीक है, और इन पे कौन सी मूवमेंट्स होनी चाहिए costovertebral पे? Somewhat rotatory movements होंगी. ठीक है, slight gliding movements of the head of the rib. यहाँ पे आप देख लो कि between the head and the body of the vertebra, these are the costovertebral joints. Costotransverse की अगर हम बात करेंगे, that is between the tubercle of the rib and the transverse process. और यहाँ पर मूवमेंट कौन सी होंगी? जो पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट अभी हम पढ़ेंगे, that will be mainly occurring at the costotransverse joints. Costochondral क्या होगा? Anterior end of the rib और costal cartilage के दरमियान, और chondrosternal between the costal cartilage and the sternum. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, upper 6 ribs are directly connected to the sternum with their costal cartilages. तो costochondral ये वाला है, और chondrosternal with the costal cartilage attaching with the sternum. अच्छा जी, अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें thoracic cavity के कौन कौन से डायमीटर्स आपने पता है, पढ़े हैं, that change in their size or dimensions? Transverse, anteroposterior and lateral. ठीक है, ट्रांसवर्स है, एंट्रोपोस्टीरियर है एंड वर्टिकल है. जिस वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट स्लाइड्स डाउनवर्ड, सो इट विल बी इंक्रीजिंग द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द thoracic cavity. जिस वक्त अपर रिब्स आगे को मूव कर रही होंगी, दैट विल बी इंक्रीजिंग द इंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, और लोअर 5 और 6 रिब्स जब मूव करेंगी, सो दैट विल बी इंक्रीजिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर. सो अगर हम बात करते हैं कि इन मूवमेंट्स का हमने नाम देना है कि कौन सी मूवमेंट है और इसमें हो क्या रहा है. ठीक है, अगर आप पहले ये डायग्राम्स देख लें, फिर आपको मैं रिब्स की मूवमेंट करवा के बता देता हूँ. When we are talking about the false ribs, ठीक है, जिन्होंने आगे कनेक्ट होना था through the costal margin, when the intercostal muscles act on them, they elevate in the lateral plane. ठीक है, so इससे क्या होगा कि transverse diameter increase करेगा, because in the normal position this was the shaft of the rib, and when they contract they move up like the handle of a bucket.
So the lower 6 ribs or lower 5 ribs move by the bucket handle movement. और जो upper six ribs हैं which are directly connected to the sternum, जिस वक्त इनको मसल कॉन्ट्रैक्ट करके upward pull करेंगे, the body of the sternum would be moving along with that. ठीक है, and this movement is similar to the pump handle. अब ये गाँव में ज़्यादा ये होता है, पानी का नल का इस्तेमाल होता है, so that is the handle is similar to that of pump handle movement. अब अगली डायग्राम में अब ये देख के मुझे बताओ कि कौन सा डायमीटर है और कौन सी what type of movement is being shown. Anterior posterior. Anyone else? Bucket handle. Transverse. Bucket handle transverse. अच्छा चलो नेक्स्ट से इसको कंपेयर करें. Pump handle anterior posterior diameter increase. ठीक हो गया, very good. So this currently shown image or the animation shows the movement of the upper 6 ribs, ठीक है, which are directly connected to the body of the sternum, and when these ribs contract, so they elevate or move this body of the sternum upward and forward, increasing the anteroposterior diameter, and this is similar to that of pump handle. So these are called the pump handle movement, and these are the lower ribs in which the maximum movement is of the shaft, leading to the increase in the transverse diameter, and these are called the bucket handle movements. Okay, so upper 6 ribs pump handle movement will be possible, and in the lower ribs that will be bucket handle. ठीक है जी, ये डायमीटर्स की हमने बात कर दी थी कि there is an anteroposterior diameter जी. सर ये नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ये बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट होती है, ये सर महसूस तो नहीं होती जी, ये नॉर्मल ब्रीदिंग की मूवमेंट्स. That when you observe your own respiration, inspiration and expiration, the chest or the ribs move upward and forward during inspiration, और जब सांस बाहर निकालते हैं, so they move downward and backward. So these are the normal movements which are occurring at the ribs. ठीक है, लेकिन उनका mode of attachment फर्क है. Upper 6 ribs directly to the body of the sternum, and the lower ribs indirectly through the costal margin. So उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या फलक्रम डिफरेंट होता है. ठीक है, so मूवमेंट की डायरेक्शन फर्क हो जाती है, but these are occurring in the normal movement, normal inspiration and expiration. ठीक है जी, there are 3 types of diameters जी. Anterior posterior diameter जो increase है वो दोबारा explain करते हैं. यहाँ पे आप देखो कि upper 6 ribs are directly connected with their costal cartilages to the body of the sternum. When the muscles would contract and elevate or raise the ribs, the anterior end moves the body of the sternum forward and upward. So जब यहाँ पे ये movement होगी, so it would lead to the increase in the anteroposterior diameter of the thoracic cavity. और जब lower 6 ribs ने अपनी जगह पे contract करके elevate होना है, so the main part is the shaft of the rib that is moving. So that is similar to that handle of a bucket. That is why it is called the bucket handle movement, increasing the transverse diameter. And here in pump handle movement, the anteroposterior diameter is increased. अच्छा जी, anteroposterior diameter is between the body of the sternum and the vertebra. The transverse diameter is from the angle of rib from one side to the other, and the vertical diameter is from the superior and inferior thoracic apertures. ठीक है, ये मसल्स आपको बता के ये मूवमेंट में आपको रिब्स पे करके बताता हूँ. सो for normal inspiration or the deep inspiration, quiet inspiration, mainly the diaphragm, जब ये contract करके it slides downward, it causes the negative intrathoracic pressure, which causes the inhalation.
And in addition, the external intercostal and internal intercostal muscles also elevate the ribs, causing increase in the transverse and AP anteroposterior diameter. जब थोड़ा जोर से सांस लेते हैं, forceful inspiration, ठीक है? What would happen? These muscles, diaphragm, external and internal intercostal, will be working. But to support them, in addition, to provide a more range of movement, there is a muscle on the back, which are the erector spinae, scalene muscles, and the pectoral muscles. These contract and move apart to increase the space or the range of movement for the muscles of respiration. ठीक है? और जब expiration की हम बात करेंगे, उसमें normally क्या है कि that is a passive movement when the diaphragm relaxes and moves upward. It causes a positive intrathoracic pressure जो कि push करेगा air को outside the body. और अगर forceful expiration करनी होगी तो abdominal musculature जिसमें latissimus dorsi और abdominal muscles है वो contract करके additional force would be applied to the thoracic region for moving the air outside. ठीक है, अब ये हर पार्ट टाइप ऑफ मूवमेंट के मसल्स दिए हुए कि जी किसमें डायमीटर कौन सा इंक्रीज होगा और कौन सी एडिशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. Quiet inspiration is a normal one which we are having daily and normally. Deep inspiration is when we are having the forceful breathing. Okay, that the above factors in addition, the first rib is raised due to the action of scalene muscles. Then is the concavity of the spine, which is straightened out with the help of the erector spinae muscle. कि posture सीधा हो जाएगा तो उससे भी thoracic cavity का size ज़्यादा हो जाएगा. अगर इससे भी ज़्यादा forceful breathing चाहिए, जिस तरह भागते हुए या exercise करते हुए, so above all factors would be added up to the elevation of the scapula. Our scapula is elevated by levator scapulae है, rhomboid muscles हैं, latissimus dorsi है, ठीक है? इस scapula को एक साइड पे फिक्स कर देंगे, that increases the space for the other muscles to act, and similarly the erector spinae contracts more forcefully to make the posture erect. Questions so far? जी. सर latissimus dorsi स्कैपुला को किस तरह एलिवेट करेगा? वो तो इंफीरियर एंगल पर होता है. Latissimus dorsi ने स्कैपुला को फिक्स करना है, ठीक है? कि लेवेटर स्कैपुला और rhomboid उसको एलिवेट कर चुके होंगे और उस पोस्चर में स्कैपुला को फिक्स करना है ताकि रेंज ऑफ मूवमेंट दूसरी जगह पर आए. So the inferior angle is stabilized by the latissimus dorsi. ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी. एक मिनट बच्चा जी. अगर हम इनकी आर्टिकुलेशन देखें, उसकी मूवमेंट देखें कि कैसे होती है और हम जो बातें अभी तक हमने हवा में की हैं, what they actually mean. एक मिनट और मुझे just a minute. Now, is it visible to all? This is the body of the sternum. This one is a body, transverse process and the spine. ठीक है जी. So इसको अगर हम साइड पे रखें, this is the head region, the tubercle, and the angle and the shaft of the rib. साइड में जब ये देखनी, this is the articulation. ठीक है, the head of the rib articulates with the body of the sternum, body of the vertebra. ठीक. Then the tubercle articulates with the transverse process.
जिस वक्त इसकी मूवमेंट होनी है, if we are talking about the upper 6 ribs, ठीक है, और ये जो tubercle है that is acting as the fulcrum, जिसका fulcrum आपने जब फिजिक्स में पढ़ा था, so that was the point on which the movement was occurring. The one arm is short and the other part is longer one. जब ये रोटेटरी मूवमेंट्स होंगी इस जॉइंट पे, ठीक है, अपर रिब्स जो हैं वो जब मूव करेंगे अपर, तो द स्टर्नम वुड बी रेज्ड अप, ठीक है। ये 10th रिब इसलिए इसमें बकेट हैंडल आप समझ लो कि when this muscle contracts and elevates, so the transverse diameter would be increasing. Normally क्या है कि जी anterior end is facing downward as compared to the posterior end. When it raises, it would increase in the transverse diameter, ठीक है, and that was pump handle or bucket handle. Quiet inspiration. Bucket handle. Quiet inspiration और सर क्वाइट इंस्पिरेशन की स्लाइड शो हो रही है अभी तक। ये अब स्लाइड शो पे अब नहीं आओगी, जो मेरा लाइव कैमरा है उसमें आपने देखना है। ओके सर। ठीक है जी, क्या अगर टू रिपीट, दिस इज द वर्टेब्रा, टिपिकल thoracic vertebra जिसकी हार्ट शेप बॉडी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइन इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, स्लैंटिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब जो जॉइंट बनना है दैट इज बिटवीन द एक हेड ऑफ रिब और बॉडी वर्टेब्रा के दरमियान जॉइंट बन रहा है व्हिच इज द कोस्टोवर्टेब्रल जॉइंट, ठीक है। ये आ गया। फिर ट्यूबरकल ऑफ द रिब और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान जॉइंट बन रहा है दैट इज द कोस्टो ट्रांसवर्स, ठीक। अब जब ये मूवमेंट्स होनी है, अब ये 10th रिब है, सो इट विल बी इन्वॉल्व इन द बकेट हैंडल मूवमेंट। तो जिस वक्त ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको एलिवेट करेगा, so it would lead into the increase of transverse diameter. इसको अगर आप समझना शुरू करो, sideways diameter increase कर रहा है कि नॉर्मल पोजीशन पोस्टर किया था कि अगर आप इमेज देख रहे थे कि शोल्डर पे मेरे आ रहा है, ठीक है, when it would contract and elevate, it will go by the away from the shoulder, ठीक है, it increases the transverse diameter. और अगर हम अपर रिब्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, the interior end is directed forward attached with the sternum, और जिस वक्त ये मसल रिब कॉन्ट्रैक्ट करके एलिवेट होगी, so it will also push the sternum upward and forward, so it would increase in the antro. अगर आप इसमें भी इमेज में देखते हैं कि जी ये मेरे फेस के एक साइड पे खत्म हो रहा है, when this rib elevates and moves the sternum upward, so it increases the anteroposterior diameter. Expiration में यहाँ पर, अब जब inspiration में गए तो ये यहाँ पे चला गया, so this is increase in the which diameter? Anteroposterior. Anteroposterior। और जो हमने पहले बात की थी that was bucket handle movement increasing the transverse diameter. Transverse. अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो बता दें। मैं अटेंडेंस लिंक आपको अभी 5 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। जी सर, ये आज जो हमने बोन्स पढ़ी हैं सर, ये बोन्स की डेवलपमेंट, सर ये सारा सोमैटिक पार्ट से बनेगा, सोमैटिक मेसोडर्म से? जी बिल्कुल, सोमैटिक मेसोडर्म जो कोर ऑफ द लिम्फ बर्ड में थी उससे ही चीज बननी है, ठीक है। और इसके अराउंड मायोटोमल सेल्स आने हैं फ्रॉम द डर्मोमायोटोम कंपोनेंट, वो आके मसल मैस बनाएंगे दैट इज फॉर्मिंग द मसल्स ऑफ द लिम्स, मस्कुलेचर ऑफ द लिम्स, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।